हेलो 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 गाइस। बहुत दिनों के बाद फिर से एक नई लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों को पूरे 4 से 5 दिन, आई गेस 5 दिन हो चुके हैं हम लोगों को लाइव आए हुए। और यार दिक्कत नहीं कि हम लोग थोड़ा जैसे बिजी हो गए थे बाकी सब काम में, तो वही मेन दिक्कत है। बाकी मैं कंसिस्टेंट था, लेकिन जो कहो कि लाइक लाइव नहीं आ पाया, लेकिन मैं कंसिस्टेंट था। मैं पैरेलली चीज़ें कर रहा था, लीड कोड वगैरह मैंने स्टार्ट किया करना। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग लाइक अ ग्रुप ऑफ सम ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो आर थिंकिंग कि हम लोग लाइव आके कुछ करेंगे। तो जल्दी आपको बताऊंगा अगर कुछ ऐसा हुआ तो, लाइक चैनल पे प्रॉपर, और उस टाइम से हम लोग सही से इस पे ध्यान लगाना चालू कर देंगे, जो हमारा ये चैनल है उस पर। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग बेसिकली, आज की जो क्लास नहीं बोलेंगे, आज का जो हम लोगों का सेशन है, इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ये 01 नैपसैक प्रॉब्लम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पूरा ये पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री भी पढ़ेंगे। अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ही मैं प्लेलिस्ट कर रहा हूँ स्ट्राइवर की, जिससे मैं अभी सीख रहा हूँ और लाइक सवाल लगा रहा हूँ। कुछ कुछ सवाल मैंने लगाए हैं, तो मैं उस पर भी कुछ वीडियोस लाऊंगा जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग में है, वो कैसे मैंने किया है उसके लिए, ताकि मुझे भी रिवीजन में इन फ्यूचर हेल्प हो। ठीक है। और फिलहाल मैं जो अपने जितने भी, मेरा ये गिटहब प्रोफाइल है, यू कैन चेक इट आउट। और मेरा जितना भी कोड रहेगा लीड कोड पे, वो मैं धीरे इसमें भी लाइक पुश करता हुआ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो जो सवाल मैं बना रहा हूँ अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस, यू कैन फाइंड इट हेयर। ठीक है। और इसमें मैं प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह के साथ में लिख रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर मुझे भी अगर जब रिवाइज करना हो तो आसानी हो। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Hi, the topic is zero one knapsack problem using dynamic programming. Already I have one video on this problem where I have explained how the dynamic programming approach is used for solving zero one knapsack problem. There I have shown more than one methods. But here I am going to discuss the program for that one. So I have written a program and I will trace the program and solve the problem so that you get the idea how to write a program for this type of problem. You may be aware of the problem that a knapsack problem is a bag is given. You have to include the objects in the bag such that the capacity should not increase. And when you include the bag, you will get the profit. And you should include the complete object or don't include at all. Now, for solving this one, I have taken one instance example here. So inside the program, if you see, look at the program, this is the data that I need. I need array of profits, array of weights, and the number of objects and the total capacity of the bag. Now one thing to observe here is I have only 4 objects, but the array size I have taken 5 because we want to start counting from 1. First object will not call it as 0, we will call it as 1. That is the reason I am taking 0th index empty, that is 0, this is also 0. Now for solving this problem, we need a table. So that table size should be of 5, 9. So 5 is 0 to 4 for 4 objects, and the 9 is 0 to 8 for 8 weights. So whatever the capacity is, you should take that many columns, and how many objects you have, that many rows, and you should add 0th row and 0th column also. So that's all k of 5 to 9. 5 means 0 to 4, 9 means 0 to 8. So I'll get 5 rows and 9 columns. Now this is the working. See one thing, I have written just a main function, everything inside main function. I did not write it into multiple functions
because I don't need it here. If I have to write, I can write the logic in some other function and divide the program into 2 or 3 functions, but it's waste. I have written a simple code here, and this will work only for this example. If you want it to work for different example, just change the values and compile it and run it. If you say no, it should always run for different type of objects, a different number of objects, then take these values as input from the keyboard. Ask how many objects are there, what is the capacity, and what are their weights and profits. You can add the code here. Now remaining part, this is the logic. So I have focused only on the logic. Let us follow this one. How this is working? This is nested for loop. I value is taking from 0 to n, means 0 to 4. I is for rows of this table, and the W value is from 0 to m. So 0 to 8, it is for columns. I and j will be changing the values of rows and columns. How they work? Let us trace this 2 for loops and fill up the table. Initially I is 0, and I is less than equal to n, so enter inside, and W is also 0, W is 0. Now enter inside. If I is 0 or W is 0, if any one of them is 0, then this condition is true. If you observe, there are 3 cases here. So this is first and the second and the third. So if is true, so I comma W is made as 0. That is 0 comma 0 is made as 0. This is 0. So actually right now I is here, that is on 0th row, and the W was here. Now W will move to 1. So this is 0 comma 1. So enter inside. Again, I value is 0 only. So this will be 0. See, now W will be taking the values from 0, 1, 2 till 8. So W will become 2, then 3, then 4, then till 8. Always I is 0 only. So this will be filled with zeros only. Now next is this inner loop ends. Now I plus plus, I becomes 1. I moves to row 1. Now we'll be considering first object. Now let us start W. W will be 0. The first time when W is 0, then also the same first condition is true. So this will be 0. So till now only first condition was true. Next let us see. W becomes 1. W becomes 1. Now when W becomes 1, this is not true. Now check this one. Weight of ith object is less than equal to W. What is W? 1. Weight of the object is, already I have written it here. Weight is 2 here. 2. Weight of 1. Right? I is 1. It's 2. 2, is it less than W? No. Else, this one. What to write here? In K of I comma W, write I minus 1 comma W. That is 1 comma 1, right? 0 comma 1. So that is 0 only. That value in the above row, in the same column. Just fill up the same value. So we have seen this also and this also. Now next, W becomes 2. When W is true, 1 comma 2. Now this time, this condition will be true. Weight of an object is less than equal to W. So weight of an object, weight of 1, 2, that is equal to 2. Now this formula is computed. Let us see how this formula is computed. So I'll follow the formula. K of 1 comma 2, 1 comma 2, I comma W is max of P of I, profit of first object. So P of first object plus K of I minus 1. K of I is what? 1. 1 minus 1. And W minus weight of the object. What is W? 2. So what is the weight of an object? Weight of an object is 2. 2. Comma. Next value. K of I minus 1. I is 1. 1 minus 1. And W is 2 only. I have to take the maximum out of these two. Let us fill the values and check. Profit of first object is 1 plus K of 0 comma 0 is 0 comma, this is 0 comma 2.
0 comma 2, this 0. So which is maximum? 1. Take it as 1. That's it. Next, value of w changes, it becomes 3. Now I will simply change the values. W is a 3 now. So this is a 3, w is 3. So this is 3 and this is also 3. Let us fill up the values. P1, profit will be 1 only, plus this is 0 comma 1. 0 comma 1 is also 0 only, comma this is 0 comma 3. 0 comma 3, this value, the upper value is 0 only. So it's 1. So anyway, all these rows will be 1 only if I use the formula, and always this second condition will be true and it will be entering in and finding the maximum value. Let us go to next row. I becomes 2 and W again starts from 0. Now this time W is 0, one of the values 0. So it will enter here. It will fill 0. And 2 comma 1, when W is 1. See this condition. Weight of an object is less than or equal to W. Weight of an object is 3. Is it less than this one? No. This is greater than that one. So it will enter into else part and it will write down the value in the previous row in the same column. So it will write 0 only. For here also 1. And for here, now it is equal. So now it will enter into the second part. So let me evaluate second part for this particular row. Now this is 2 comma 3. 2 comma 3. Profit of second object. This is 2 minus 1. Weight is 3 and the weight of this object is also 3. 2 minus 1 and the weight is 3. I have filled the values in this formula directly. Maximum of P of 2, profit of the second object is 2, plus this is 1 comma 0. 1 comma 0 is 0, comma this is 1 comma 3. 1 comma 3 is 1, which is minimum 2. 2 is written here. Now in the next value also you will get 2 only if you try that, but here for this it will change. Let me show you this. So I is a 2 only, W is a 5. So I will change the value of W. This is 5 and this is 5 and this is 5 for the same row. What are the values? Profit of second object is 2 plus K of 1 comma, this is 2. 1 comma 2 is 1. 1 comma, this is 1 comma 5. 1 comma 5 is 1 only. 1 out of this which is minimum, maximum. 2 plus 1, 3 is maximum. We got 3. This means that when the capacity of the bag is 5, we can fill up 2 objects, both objects. This one, both. See their weights are 2 and 3, total is 5. So we can include both objects. Rest, I'll get the same thing only, 3, 3, 3. Now when I becomes a 3, third object, till weight 4, we'll be getting same thing in the previous row. Now here, this object can be included, we get 5, and the next also 5. If you use the formula. Next, this one I'll show you. 3 comma 6. K of 3 comma 6 is maximum of P of third object plus K of 2, and the weight is how much? 6. W is 6. And the weight of this one is? Weight is 6 minus weight of the object is 4. 6 minus 4, comma K of 2, comma 6. Let us check. अरे यार मैंने फिर से माइक बंद कर रखा था, अभी मुझे याद आया 12 मिनट हो गए हैं, बताओ 12 मिनट का दिक्कत हो गया है माइक का। चलो ठीक है, चले। We can include these two objects, 4 as well as 2 means first object and the second object, so the profit that we get is 6. Let us try next when it is 7. So 3 comma 7, so this becomes 7 and this becomes 7. Profit of this object is 5 plus 2 comma 7 minus 4, that is 3. 2 comma 3, 2 comma 3 is 2, 2 comma 2 comma 7, 2 comma 7 is 3, 3. Which one is greater? 7. What does this mean? When the capacity of the bag is 7, we can include these two objects, you see. Their weights are 3 plus 4, 7. So it will be, profit will be 7. 5 plus 2, 7. So rest also will get 7. This way every time second condition is true and these are getting filled, right? First and last condition will not get filled. Now for the fourth row, its weight is 5. Till 5, these will be as it is. And fifth, profit will be 6. And when it is 6, it will be 6 only. And when it is 7, then these two can be included. So that is 2 and 5, they can be included. So this will be 7. And at 8, these two can be included, 5 and 3. So this will be 8. Without the formula I am showing you, now you have understood how this code is working. Finally, C out K of n comma W. N is 4, W is 8. So this is the answer. So this is the optimal cost we got. Now we want to know which object is included, which is not included. So for that, we can start I from N, that is N, and J from M, that is 8. So 4 comma 8, they will start for 4 comma 8. Now what to do? If K of I comma J is equal to K of I minus 1 comma J. This means that if this value is already present in this one also, it means if this is also 8, means fourth object is not included. This solution is not because of including fourth object. We got 8 now only, so this means fourth object is included. So if this is equal, means it is not included. So if it is not included, then what I can do is C out 4, that is fourth object, that is I, is equal to 0. This will be displayed, right? And L, and also go to the previous object. So and weight will be same only, I minus minus. I have written in the single row only, because else
See, this is not equal. This is not equal. Then what to do? It means this object is included. So C out I is equals to 1. This is included in the bag. And this is NL. NL. Then what more I should do? Go to the previous row. Okay, I minus minus. But what about weight? When this object is included, I have to know to the previous object whether it is included or not. So the weight of this object, that is 6, should be, sorry, 5 should be subtracted from J. So I'll remove this. J assign J minus weight of that object, ith object, weight of that object. And it's greater than 0. But this was there here also, so right? So the piece of code I have written, if you want to continue writing here, so using a loop, you can go from the last row towards the first 0th row and find out which objects are included, which are not included. आई थिंक मुझे इसके लिए सवाल ही करना पड़ेगा, वो सब छोड़ते हैं, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री की बात देखते हैं, सक्सेसफुल सर्च ओनली। ये 4.6 क्वेश्चन है, आज ये लास्ट करेंगे, उसके बाद में हम लोग सोएंगे और धीरे से रिवीजन भी चालू करना पड़ेगा। I am going to talk about what is binary search tree. Then what does it mean by optimal binary search tree? The problem. Then the dynamic programming approach for solving this problem. So I'll take an example and I will solve it. And I will also use the formula and show you how the formula is generated. My focus will be on showing you how dynamic programming is working on this problem, right? Instead of just showing you a shortcut how to fill up the table and get the answer. Let us start with binary search tree. See, the set of keys are given here and the purpose is to search the keys. If already I have the list of elements and I want to search some element. So there are different search methods like linear search and binary search. And also we have a data structure called binary tree. Can we utilize binary tree for searching purpose? Let us see. I will arrange these elements in the form of a binary tree. So I will create a binary tree out of these elements. So I'll keep root as 40 and 20 as its left child and 10 as its left child and 30 here, 60, 50 and 70. Now you can see that the elements are arranged such that for any node, all the elements on its left hand side are smaller, all the elements on its right hand side are larger. For 40, all these elements are larger, and for the 60, this element is larger and this element is smaller. Likewise here also. So the benefit of arrange this type of binary tree is that it is useful for searching. Suppose I want to search for a key element 50, then I can start from here. Is it 50? No, 50 is greater than this one, so definitely it's on the right hand side. Go here and check it. Is it 50? No, the key value what I'm searching is smaller than this one, so go on the left hand side. Yes, key is found. So that's how. What is the time taken for searching a key element? The maximum time will be if the element is in the leaf. So what is the amount of time? So this is height of a tree, and the height of a binary tree is minimum log n, and this is minimum height only. So the time taken for searching in a binary search tree is log n. Now one more thing we have to consider here. When I'm searching for the key like 50, I got the key. Suppose I'm searching for a key element that is 45. Is it there? No. If I search for it, 45 is greater and 45 is smaller than 60, 45 is less than 50. So my search will terminate here and the search is unsuccessful. So search may be successful or search may not be unsuccessful when you're searching for the keys. Now next, I will show you for a given set of element how many different binary search trees are possible. I have taken just 3 keys. Let us see how many different binary search trees are possible. So for these 3 keys, 10 as a root and 20 as its right child and 30 here. So 10, 30 and 20 on this side. 20, 10 and 30 on this side. So for 3 keys, there are 5 different binary search trees possible. Right? So for n keys, how many different binary search trees are possible? 2n cn by n plus 1 binary searches are possible. So for 3, this will be 2 into 3, c3 by 3 plus 1, this will be 5. So 5 different binary searches are possible for 3 keys. कीज लेते हैं, ठीक है, कीज लेते हैं 10, 20 एंड 30। 10, 20 एंड 30 के लिए 10 इधर आएगा, 30 इधर आएगा, 20 इधर आएगा। ये तो स्क्यूड वाला ही हो जाएगा एक, और दूसरे केस में 20 इधर, 10 इधर एंड 30 इधर, ठीक है। तीसरा केस 30 से छोटा होगा 10 और 20 होगा बड़ा, ये हो जाएगा। चौथा केस हो जाएगा तुम्हारा 30 से छोटा होगा 20 से छोटा होगा 10, ठीक है। तो ये तुम्हारे टोटल मिला के 5 टाइप बने। तो इसका होता है 2n cn, या 2n cn में 2 ऊपर ही होता है ना, तो 2n cn अपॉन n plus 1 total number of binary trees, possible binary trees. Okay, for n number of keys, these many are possible. You'll see what is the cost of searching in each tree. See, the cost is dependent on the number of comparison required for searching for a key element. So in this tree, if I am searching for this key element, then the cost is 1. If I search for this one, then I have to make 2 comparisons. And if I have to search for this one, I have to make 3 comparisons. So what is the average number of comparison? Average number of comparisons are, there are total 3 nodes, so this is 6 by 3, that is 2. Likewise, if I consider all of them, then this is 1 and this is 2 and this is 3. So this is 1 plus 2 plus 3, that is 6 by 3, that is 2. And here it is 1 and this is 2 and this is 2. So this is 5 by 3. So this is less than 2, right? And this is
1, and this is 5 2 क्यों comparison and 3 3 comparison, होगा so ना this is 6 by 3. 1 comparison, 2 comparisons and 3 comparisons, so this is also 6 by 3. So you can see that out of these 5 trees, one of the tree I got less number of comparisons. That's average of comparison is less. So that's what this is, a balanced binary search tree. So why we got less is the height of this tree is less. So that's why this is balanced binary search tree. So I have shown you what does it mean by height balanced binary search tree. Now let us come to the actual problem. हाइट बैलेंस सर्च ट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 2 3 लो, यही 1 2 3 हो जाएगा, ये 1 2 2 हो जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा, यही 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6/3 होगा, इसको भी 6/3 होगा, ये 5/3 होगा, ये भी 6/3 होगा, ये भी 6/3 होगा, ये वाला जो है इसको बोलेंगे तुम क्या बोलोगे, इसको हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री बीटी हो रही है गाइस. That is optimal binary search tree. So in this problem, we consider that if these are the keys available, then we also consider what is the frequency of searching of those keys. If the keys What are is having the some frequency frequencies of searching let us say the those frequency of trees? searching 10 is 3, and this is 2, and this is 5. So this means that all the keys will not search them with the same frequency. Some keys are there that are more frequently used, so we search them more frequently, more oftenly, and some are rarely used. So like that, who is having highest frequency? 30 is having highest frequency. Then, if the frequencies are defined for each key, then what will be the cost? So I want to know which tree organization will be optimal or better. So let us check them. See, the number of comparisons required for this one is 1, but its cost is 3, frequency is 3, and this frequency is 2, and this frequency is 5. So how much this will be? 15 plus 4 plus 3, 18. And this is 3, and this is 2, this is 5, and this is 2. So this is 10 plus 6 plus 3. So this is 19. And here the frequencies are, this is 2, and this is, the number of comparisons are 2, and its frequency is 3. So this will be 3 into 2. And the number of comparisons required, that is the level, is 2, and its frequency is 5. So this is 10 plus 6 plus 2. This is 18. And here it is 5, then 10, that is 3, and this is 2. So this is 5 plus 6 plus 6. So this is 17. And this is 5 into, this is 2, and this is 3. This is 9 plus 4 plus 5, 18. Now the cost of the trees are different. You can see that this tree organization has given us best result. So that is optimal binary search tree for these 3 keys. Though it is not height balanced, this was height balanced. Now the height is more, but based on the frequencies, that cost of that binary search tree is minimum. So that's what the problem is. If the keys are given and the frequencies are given, we have to find out which tree organization will be optimal based on the frequencies. Now I will take a problem and I will solve it using dynamic programming approach. Here I have keys 10, 20, 30, 40, and their frequencies are given here. For finding out optimal binary search tree for these set of keys, I have एक मिनट मुझे फिर से बताइए सर. 4 plus 5. This is 2. So this into 6 plus 6. Different. You get 3 keys. Though it is not height balanced. This was height balanced. Now the height is more, but based on the frequencies, that cost of that binary search tree is minimum. So अच्छा मतलब frequency पे भी depend कर रहा है. We have to find out which tree organization will be optimal based on the frequencies. Now I will take a problem and I will solve it using dynamic programming approach. Here I have keys 10, 20, 30, 40, and their frequencies are given here. For finding out optimal binary search tree for these set of keys, I have created a table here. I will fill in the values in this table, and then that will help me to generate a table. 40. Here the keys are 1 to 4. Now the table you can see that it's starting from 0 onwards, right? But the keys are starting from 1 onwards. I have taken from 1 onwards. This is from 0 onwards, so that it's suitable for formula. Let us see how to solve this problem. Let us call these rows as I and columns as 1 J. 2 3 Now first of all, we'll 4 find out those values which are 1 2 J minus I is equals to 0. So for which values it will be? J minus I will be 0. This is 0 minus 0 is 0. 1 minus 1 is also 0. 0 1 2 3 3 minus 3. 4 4 0 minus 1 4. 2 3 All these 4. are 0. So it means I'll find out the cost of 0, 0 and 1, 1 and all these. So it means I'll fill up the diagonal. And for the diagonal, I'll first fill up with all zeros. This is the first step. Now I will find out this diagonal. So in this one, J minus I value should be 1. J minus I equal to 1, then what it should be? So this is 1 minus 0 is 1, 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is also 1, 4 minus 3 is also 1. So this is 0, 1, 1, 2, and 2, 3, 3, 4. So I'll find out the cost of all those. Cost of 0, 1, cost of 1, 2, cost of 2, 3 and 3, 4. Now we will start filling the values. Now see 0, 1 means I'll be considering just one key, that is key 1, 10.
What is frequency? 4. So the cost is 4. 4. And C of 1 to 2, just ignore this first value and take this one. So this is the key. Second key is 2 Okay. and the cost is 2. So yes, this is 2. And this is third key is 30 and its cost is C, that is frequency is C, 6. so the cost is 6. 6. And this is 40 and its frequency is 3, so the 3. cost is 3. Cost is So 4, 2, 6, 3. So I got the answers as 4, 4, 2, 2, 6 and 3. So I have considered just one note where j minus I equal to 1. Now next we will go for j minus I equal to 2. Now when this j minus I will be equal to 2, so this will be for 2 minus 0, this is 0 comma 2, and 3 minus 1, this is 1 comma 3, and j will be 4 and I will be 2, so this is 2 comma 4. So for these things, j minus I value will be 2. So it means I'll be considering 2 keys. So I will consider first key and second key first, so that means I will take this one first. So cost of 0 First comma key 2 and second find out. key. This is 0 comma 2, right? I'm considering 2 keys. So what are those 2 keys? Just ignore 0, start from 1. So key 10 and key 20. What are their frequencies? 4 and 2. 4 and 2, हाँ. Let us see, using these 2 keys only, what is the minimum cost Minimum binary cost. search tree or the optimal binary search tree I can generate just by using 2 keys. So for 2 keys, what are the possible binary search trees? 10 and this is 20. That is, first is the root and this is, second one is the root, so 10 will be on this side. So what's the cost of this? So directly I will calculate. See, the frequency is 4 and this is 1 time, and this is frequency is 2 and the number of comparisons are 2. So how much this is? 4 plus 4, it is 8, and this is 2 into 1 and this is 4 into 2. So 1 comparison required for this and 2 comparisons required for this. So this is how much? 8 plus 2. So this is giving 10 and this is giving 8. So which one is minimum? This one is minimum. 8. Minimum cost is 8 and which key is forming a root? 1. So I will fill up this value 8 and the root is 1. Now I will show you how I can apply the formula here. Now before showing the formula, I will use one value, that is weight of 0 to 4, for example. Then this means sum of all the frequencies from 1 to 4. Actually we have frequencies from 1 to 4, but we'll write from 0 to 4, right? We are starting from 0 so that we can make a formula. So C of 0 to 4 means sum of all the frequencies from 1 to 4. So let us see the formula. See, this is, the cost is 8 I got. Now here I was taking root as 1. So this is C of 0 comma 0 on the left hand side, then C of 1 comma 2 on the right hand side, plus weight of 0 to 2, right? So this is 0 to 2. Let us check from the table what we got. Will we get this value as 8 or not? Let us check. नहीं पढ़ रहा है, C of पल्ले 0 नहीं comma पढ़ रहा है भाई, ये ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, ये तो पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है कुछ भी इसमें. चलो थोड़ी देर जीपीटी सान या अपने ग्रोक सान से मदद लेते हैं, और अगर उसके बाद में भी पल्ले नहीं पड़ा तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे, एक मिनट, कहाँ गया पिक्चर इन पिक्चर फाइल, इस कॉपी यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट, और इसको करना है हमको कॉपी, कनेक्शन फेल्ड हुआ, ठीक है, तुम जाओ कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया. अब ग्रोक खोलो, ग्रोक बताओ भाई. समरी ऑफ ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, सक्सेसफुल सर्च ओनली, जिसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है. बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी बेसिक्स. बीएसटी अरेंजेस कीज लेफ्ट सब ट्री is lesser than node and node is lesser than right subtree. Yes, that is I know. और सर्च टाइम ऑफ log n होगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस्ड बाइनरी सर्च की अगर बात करें तो ऑफ log n ही होगा, क्योंकि उसकी हाइट जो होती है बाइनरी सर्च ट्री की वो ऑफ log n होती है, ठीक है. सर्च कैन बी सक्सेसफुल, की फाउंड, और अनसक्सेसफुल, की नॉट फाउंड. ओके. ऑप्टिमल बीएसटी प्रॉब्लम का जो गोल है वो है मिनिमाइज द एवरेज सर्च कॉस्ट बेस्ड ऑन की फ्रिक्वेंसीज. Different BST structure for the same keys yield varying costs, search costs. Cost depends on number of comparisons weighted by key frequencies. Okay. So number of comparisons हम जितने ज़्यादा करेंगे और उसका वेट होगा की फ्रिक्वेंसी. ऐसे मान लो अगर हम 20 और 30 है, इसका कंपेरिजन एक बार हुआ, इसका कंपेरिजन 2 बार हुआ, मतलब ये दूसरा कंपेरिजन है, ये पहला कंपेरिजन है, तो इसका जो वेट होगा वो 20 इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ 20, और इसका जो वेट होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ, सॉरी 20 नहीं होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वो हो जाएगा, यानी 1 नंबर ऑफ तुम्हारा कंपैरिजन, ठीक है, 1 इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस थिंग एंड द अदर वन वुड बी 2 इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट थिंग. ओके, नाइस नाइस. नेक्स्ट, आगे हम क्या करेंगे, सर्च कैन, अच्छा ये इधर साइड आ गया ना.
कॉस्ट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कंपेरिजन वेटेड बाई की फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। फॉर कीज 10, 20, 30 विद फ्रिक्वेंसीज 3 to 5 द ऑप्टिमल BST में नॉट बी हाइड वैलेंस ट्री। तो यही हमारा केस हुआ था पिछली बार कि हम लोगों का जो BST है वो लाइक वो तुम्हारा वो हाइड बैलेंस लाइक वैसा नहीं था, ठीक है। यही हमारे साथ हुआ था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हाँ ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच में। तो कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम यूजिंग नॉर्मल या मेमोराइजेशन DP। Find optimal binary search tree minimizing the average search cost for keys with given frequencies. That is our like goal of this problem. Okay, ये हमारा गोल है। कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट इज सम ऑफ फ्रिक्वेंसी इनटू कंपैरिजंस नीडेड पर की, ठीक है। तो मेमोराइजेशन अवॉइड्स रिडंडेंट कंप्यूटेशंस इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। मेमोराइजेशन का DP अप्रोच जो होगा वो होगा कीज जो होंगी वो 10, 20, 30। कैन यू हेल्प मी विजुअलाइज इट। भाई जब से चैट GPT और ये सब आए हैं ना, मौज ही मौज हो गई है। कुछ भी पूछ लो, चार्ट जनरेट कर रहा है। मुझे तो ये तो पता ही नहीं था कि लाइक ये फेल टू जनरेट चार्ट नहीं जनरेट कर पाया भाई तुमने। ट्राई अगेन करो। क्यों भाई? यू वांट अ चार्ट, ठीक है। चार्ट जनरेट कर रहा है, मुझे नहीं लगता ये कर पाएगा क्योंकि मैंने ग्रॉक में कभी चार्ट नहीं जनरेट करते हुए देखा। वो कर दिया भाई चार्ट जनरेट। अच्छा छोड़ो वो। ठीक है। सब प्रॉब्लम होगा I(j), मेमोराइजेशन टेबल की सब प्रॉब्लम होगा I(j). यूज CFI(j) फॉर कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री फॉर k keys I to j। Store root for each ij to reconstruct tree। Can you give me भाई सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत तो वही है कि क्या करना चाहते हैं एक्चुअली में, ये पता ही नहीं है। कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री दैट मिनिमाइजेस द एवरेज सर्च कॉस्ट फॉर अ ट्री विद गिवन फ्रिक्वेंसीज। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल दिया तो है। अगर कीज 10, 20, 30 एंड 40 हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी 4, 2, 6 एंड 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्वेंसी? फ्रिक्वेंसी से मतलब क्या है? मतलब लाइक इतनी बार आ रहे हैं ये, आकर इतनी बार कर रहे हैं। की इज ऑफन frequency of a key is often it is searched in the binary tree. How often it is? Okay, got it. अच्छा, आप समझा मैं। मतलब अगर 10 है तो अगर टोटल मतलब काइंड ऑफ ऐसा समझ लो कितनी बार सर्च हो रहा है। तो जैसे 30 को सबसे ज़्यादा बार हम लोग सर्च कर रहे हैं, तभी इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 6 है। एंड 40 को उससे कम, सबसे कम बार 20 को सर्च किया जा रहा है, इसीलिए उसकी फ्रिक्वेंसी 2 है, ठीक है। इंडिकेट्स की यूजेस, यानी हायर फ्रिक्वेंसी मतलब मोर फ्रिक्वेंट सर्च। अच्छा, इन ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री कीज विद हायर फ्रिक्वेंसीज आर प्लेस्ड क्लोजर टू द रूट टू मिनिमाइज द टोटल सर्च कॉस्ट। ठीक है, ये समझ में आया मुझे। ओके नाउ प्रोसीड। ऊपर कौन पड़ेगा स्क्रॉल करके? प्रोसीड करवाते हैं इससे। भाई प्रोसीड करो। तो प्रोसीड कर रहा है ऑप्टिमल बाइनरी सर्च। बिल्ड अ BST मिनिमाइजिंग टोटल सर्च कॉस्ट
फॉर कीज विद गिवन फ्रिक्वेंसीज, हाउ ऑफन ईच की इज सर्च्ड। कीज दे रखे हैं 10, 20, 30, 40। अब तुमको एक मिनिमाइज करते हुए टोटल मिनिमाइज करते हुए एक बीएसटी बनाना है, टोटल सर्च कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए एक बीएसटी बनाना है, ठीक है। काइंड ऑफ अगर मैं कोशिश करूं विजुलाइज करने की, तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है 10, 20, 30, 40, ये तुम्हें दे रखा है की, ठीक है, ये तुम्हें दे रखा है की। तो अगर मैं विजुलाइज करने की कोशिश करूं, तो मान लो सर्च ट्री की बात करूं, तो 10 बनाओगे और इधर साइड इधर तुम 40 बना सकते हो, इधर तुम 40 बना सकते हो, और 40 का इधर तुम वो बना सकते हो। तो ये बाइनरी सर्च ट्री तुम्हारा एक बन जाएगा, ठीक है। एक बाइनरी सर्च ट्री ऐसा बन सकता है। और भी कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं, लेकिन उस केस में अब अगर इसकी हम लोग बात करें फ्रिक्वेंसीज की, तो फ्रिक्वेंसी कितनी है, फ्रिक्वेंसी है ये, फ्रिक्वेंसी है ये, ठीक है। तो यानी 10 की जो फ्रिक्वेंसी है, 10 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 10 की फ्रिक्वेंसी है 4, और 20 की फ्रिक्वेंसी है 2, और 40 की फ्रिक्वेंसी है 3, एंड 30 की फ्रिक्वेंसी है 6, ठीक है। तो अब तुमको बेसिकली अगर मैं सर्च करने की बात करूँ, तो ये इसको मैं पहला सर्च मानूंगा, ठीक है, प्लस यानी, और अगर मैं 10 सर्च कर रहा हूँ तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 40 सर्च कर रहा हूँ तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, और अगर मैं 30 सर्च कर रहा हूँ तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आएगा 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 34, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस ट्री को दूसरे टाइप से बनाता, सपोज ये ट्री को मैं बना रहा होता, बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर मैं इस ट्री को बनाया होता किस तरीके से, अगर मैं इस ट्री को बनाया होता, हाँ ठीक है, अगर मैं इस ट्री को बनाया होता कि इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट करो, अगर मैं इस ट्री को इसको भी थोड़ी देर के लिए डिलीट करो, ये दोनों को उठा के इधर लेके आओ, ठीक है, और इन दोनों को उठा के यहाँ पे लेके जाओ। अब इसको इधर जोड़ दो, ठीक है, और इसको भी इधर जोड़ दो। ऐसे भी तो बनाया जा सकता है इसको। बेसिकली हम लोग बाइनरी ट्रीज में क्या करते हैं, राइट साइड में जो राइट सब ट्री जो होता है वो बिगर देन द रूट नोड, मतलब सॉरी नोड, रूट नोड होता है, रूट नोड या बोल सकते हैं कि पेरेंट नोड, तो यही हमारा होता है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा ये, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है, और ये चला जाएगा तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 6 3 2 जा सॉरी 6 2 जा 12, 9 12 कितना 21, ठीक है, 21 एंड 8 29, 29 टू 31 30, ये 3 इंटू 3 है, सॉरी, लेकिन ये 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 1 जा 6, और यहाँ पे 6 6 12, 12 12 24, 24 और 4 28, तो ये तो 28 ही बचा, ठीक है। यहाँ पे इसकी सर्च जो कॉस्ट है वो 28 बची। अब वो चाह रहे हैं, सवाल जो है वो चाह रहा है कि तुमको एक बीएसटी बनाना है, मिनिमाइज करनी है टोटल सर्च कॉस्ट, यानी कि जो ये वैल्यू जो आ रही है 31, 28 और 34, इसको तुम्हें मिनिमाइज करना है, ठीक है, बीएसटी बना के। तो कैसे करेंगे वो देखो, हेल्प मी थिंक अबाउट इट। स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, फ्रॉम बेस केस टू सब प्रॉब्लम्स, फर्स्ट नॉर्मल रिकर्जन, फिर डीपी, देन डीपी।
पहले नॉर्मल रिकर्जन तो देखो, डीपी तो लगाते रहोगे। स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री विद नॉर्मल रिकर्जन एंड देन डीपी। तो तुम्हारा अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्टिव है कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री फॉर कीज 10 20 इतना, फ्रीक्वेंसी इतना, that minimizes the total search cost which is sum of frequency multiplied by number of comparisons। हाँ, तो यहाँ पे जो ये मैंने 2 और 3 और ये लिखा हुआ हूँ ना 1, ये that is nothing but number of comparisons needed to reach that particular value। So if we want to reach till, like if we are looking for key 20, then we need to compare two values, like first for this we need to look for a root whether this is greater than like whether this is 20 or not, or if it is not 20 then whether it is greater than 20 or lesser than 20, because it is, if this is greater than 20 then we need to go to left of this, and if it is greater than 20 then we need to go to, sorry, if it is greater than 20 then we need to go to left, and if it is lesser than 20 then we need to go to right। that is the like approach or thinking। अब हम लोगों का मिनिमाइज करना है एवरेज सर्च टाइम बाय अरेंजिंग कीज। ठीक है, तो यार अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ। अभी मुझे एक बार घर पे भी बात करनी है, बहुत देर हो गई घर पे बात नहीं की। बाकी अभी के मतलब कुल मिला के हमने ये जो समझ तो लिया है कि क्या कहना चाह रहे हैं, ये देखते हैं क्या होता है। कल हम लोग फिर से एक लाइव रखेंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट कर रहा हूँ, और मैंने शुरुआत की 10 वीडियोस हमारे स्ट्राइवर भैया की देख ली हैं। टेक यू फॉरवर्ड का अगर मैं, ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो मैं, हाँ मेरा 9 हो चुका है और 10 भी हो चुका है, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 10 भी हो चुका है। 9 10 लगभग सेम ही थे, इसलिए मैंने 10 को आधा देख के इसका सवाल बना लिया था, इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं देखा। अब 11 कल देखेंगे। ये मैं अपने खाली समय में काम कर रहा हूँ, लाइक डीपी खाली समय में कर रहा हूँ, इसके मैं सवाल को डिस्कस करूँगा, हो सकता है। अभी हम लोग फ़िलहाल अब्दुल वारी सर की ये वाली लाइक अब्दुल वारी सर की ये वाली प्लेलिस्ट हम लोग पूरी करेंगे पहले, उसके बाद में हम लोग आएंगे सवाल पे, ठीक है। एंड हमारे हिमांशु भैया का फ़ोन आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में, मतलब नेक्स्ट वीडियो अब्दुल वारी सर की उसके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यार